नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ओल्ड प्रोवर्ब थी, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। अब काफ़ी कानून बदल चुका है एवर सिंस। अब तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन होती है टीचर्स के ऊपर कि किस तरह की उन्हें पनिशमेंट देनी है। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल ही बैंड है। तो लेकिन अभी एक बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जो एक तरह से थोड़ा रिस्पाइट देती है टीचर्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि माई डिसिप्लिन टू करेक्ट द स्टूडेंट इज ओके। तो क्या है ये जजमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एलोबरेटली जो है इसमें केस लॉ और फैक्ट्स को जो है डिस्कस किया गया। क्या है ये जजमेंट, मैं आपको ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ले चलूँ इस जजमेंट की तरफ, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपना जो है व्यू देते रहें, अपने कमेंट्स देते रहें, फीडबैक देते रहें और शेयर भी करें जितना अधिक से अधिक कर सके। तो धन्यवाद। चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। तो ये है जजमेंट, जैसे आप देख पा रहे हैं। इसके फैक्ट्स ये है कि अपेलेंट अक्यूज्ड प्रेफर्ड प्रेजेंट अपील thereby challenging judgment and conviction in special court number so and so passed by the London Children's Court for the state of Goa at Panaji. The appellant was found guilty for offence punishable under section 324 of the IPC and for the offence punishable under section 2M1 punishable under section 8(2) of Goa Children's Act 2003. The appellant was sentenced to pay fine of rupees 10,000 in connection with the offence punishable under section 324 of the IPC and in default to undergo simple imprisonment for a term of 6 months. और जो सेकंड पेनल्टी थी, the appellant accused was sentenced to undergo simple imprisonment for 1 day and to pay fine of rupees 1 lakh in default to undergo simple imprisonment for 1 year for the offence punishable under section 8(2) of Goa Children's Act 2003. तो ये जो है इसमें बेसिक जो इसमें सजा हुई थी उनको, टीचर को। और इसमें जो है पैरा 6 में जो है, Mr. Disa submitted that appellant was working as a teacher in the school and being a teacher she was having every authority to correct a student who is committing mistakes or even not maintaining discipline. ये एक डिफेंस था इसमें जिसके बेसिस पे ये आर्गुमेंट हुई है। The victims in the present matters were the students in the school, and if the teacher tries to correct them for their mistakes and in order to discipline them, cannot be construed as offence under the IPC or under the Goa Children's Act for the simple reason that there is no such mens rea. She committed she submitted that the victim consumed the water from the bottle of another student, and therefore appellant, being the teacher of the class, tried to correct the victim by saying that she should bring sufficient water for herself in her own bottle and should not consume the water from the bottles of other students cannot be construed as an offence at all. He would submit that the parents, when admitting their child to the school, gives authority to the teacher and the principal of the school to act in accordance with for maintaining discipline and to correct the child if required. He would submit that even if some physical force is used which is not going to cause any harm or injury to the child, or even insult only with an intention to correct such child for the mistake committed, would not constitute an offence, and that too under IPC or under Goa Children's Act. The only intention of the teacher is to maintain discipline and to inculcate good habits in a child student so that such student would be an asset to the society in future. तो ये इतने सारे जो है इसमें ये आर्ग्यूमेंट्स थी। और पैरा 7 में, the circumstances in the present case are peculiar, which clearly goes to show that alleged stick or ruler used by the accused to assault the victim is not at all recovered. No specific injuries are found on the person of the victim. यानी कि अगर मेरिट पे भी देखें तो इसमें जो है, जैसा कि पैरा 7 में नोटिस किया गया, एलिगेशन था कि टीचर ने स्टूडेंट को जो पनिशमेंट दी है और रूलर यूज किया है या स्टिक की है, लेकिन वो रूलर और स्टिक जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने वो कलेक्ट ही नहीं किया है। तो एक तो ये ऑन मेरिट ये पॉइंट हो गया इसमें। फिर जो मेन पॉइंट फॉर कंसिडरेशन थे वो पैरा 11 में है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के, whether the alleged act of scolding and correcting a student by a teacher would constitute an offence, or whether the prosecution succeeded in proving that the accused assaulted both the victims with a ruler stick, thereby causing injuries.
एक तो जो प्रिंसिपल है वो लॉ का है और एक जो है फैक्ट का है। लॉ का प्रिंसिपल ये है कि जो टीचर ने जो स्टूडेंट को डांटा है या कोई जो एक्शन लिया है, क्या वो जो है एक ऑफेंस के दायरे में आता है वो एक्शन उतना जितना किया है। और दूसरा ये कि क्या प्रोसिक्यूशन ने प्रूव किया था कि जो रूलर स्टिक जिससे वो इंजरी हुई थी उसको रूलर स्टिक को जो है उन्होंने कलेक्ट किया है, उसको प्रूव किया है कि भाई इसको रूलर स्टिक से ही किया है। तो जैसा कि मैंने ऊपर ये पहले ही आपको दिखा दिया कि रूलर स्टिक तो इन्होंने रिकवर नहीं किया, तो एक तो ये ऑन मेरिट यही बात होगी। और दूसरा जो मेन पॉइंट था जो पैरा 21 में था वो है डॉक्टर नॉट एग्जामिन्ड। हर्ट सर्टिफिकेट्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन रिकॉर्ड एज एग्जिबिट 20 collectively dated so and so. However, the doctor is not examined to prove that any injuries were caused specifically with a wooden stick or ruler as the case may be. तो ये भी एक पॉइंट जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाए उसमें। और रूलर नॉट प्रूव्ड है वो तो मैं पहले भी बताया था, लेकिन पैरा 36 में भी आया है। As far as use of ruler or stick by accused is concerned, the same has not been sufficiently established. फिर उसके बाद जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट की है वो पैरा 38 में है। वो है कि दिस फैक्ट क्लियरली गोज टू शो दैट PW2 वो जो स्टूडेंट है was not maintaining proper discipline, and in such circumstances if a teacher is even using some harsh words or reasonable force to correct a child would not in any manner amount to an offense। और इसमें हवाला दिया गया है सेक्शन 89 ऑफ इंडियन पिनल कोड का, जो कहता है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। तो ये इसमें जो है ये सेक्शन 89 में एक इसमें जो है एक डिफेंस अवेलेबल है। और फिर इसके बाद जो है पर्पस क्या था, पर्पस क्या है जो स्टूडेंट्स का स्कूल में जाने का, उसके बारे में ये एक इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट की यही है। वो है द स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन द स्कूल फॉर नॉट ओनली द पर्पस ऑफ टीचिंग बट ऑल्सो टू लर्न अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विच इंक्लूड डिसिप्लिन। द पर्पस ऑफ स्कूल इज नॉट ओनली टू टीच द academic subjects but to prepare such students in all aspects of life so that in future he would be a person of good behavior and nature। फिर फर्दर जो कोर्ट ने इसी पैराग्राफ में ऑब्जर्व किया है, if the teachers are under fear of such allegation for trivial matters and more specifically while correcting children, it would be difficult for conducting schools, thereby giving proper education and more specifically maintaining discipline। A civilized society needs civilized young generation which would respect each other and would be considered as a future generation of the nation। फिर इन सारी ऑब्जर्वेशन के बाद जो है अल्टीमेटली जो फाइंडिंग्स है वो पैरा 62 में दिए। बहुत लंबी जजमेंट है ये, लगभग 36 पेजेस की है। वो ये है, द मैटर इन हैंड क्लियरली गोज टू शो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस टू prove that the accused used any stick or ruler to assault PW1 and PW2. Secondly, deposition of PW1 and 2 are contrary to each other on material aspects. Both these witnesses tried to improvise only to cover their own mistakes and mischief in the school, which normally a child is intending to do. To my mind, the present matter is clearly attracted under the provisions of Section 89 of IPC, as even if it is considered that the teacher accused used some physical force, it was only to correct the child with no malafide or other intention। फिर इन सारे व्यू पॉइंट को और काफी सारा केस लॉ और जो लॉ के प्रोविजन को डिस्कस करने के बाद जो है ये डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है। Having said so, the punishment imposed on the appellant accused needs to be quashed and set aside. Appeal is allowed, impugned judgment and conviction under section 324 of the IPC and section 2MI punishable under section 82 of the Goa Children's Act 2003 stands quashed and set aside। Accused stands acquitted of all the charges। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आई है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इन दी हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट गोवा है, क्रिमिनल अपील नंबर 30 ऑफ 2019 है। और केस का टाइटल है मिस रेखा एलियास विधिला फालदेसाई वर्सेस स्टेट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे एट पनाजी गोवा। और जो कोरम है वो था ऑनरेबल जस्टिस भारत पी देश पांडे। और ये जो है 2 फरवरी 2023 की अभी की हाल की ही जजमेंट है और ये बहुत ही वैल्यूएबल जजमेंट होने वाली है। तो आप इसका जो है लिंक कर दीजिए शेयर उसी ढंग से जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हो सकता है ये बहुत लोगों के बेनिफिट में आने वाली चीज़ है।
और इसमें जो एक प्रिंसिपल लॉ का ले डाउन किया है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ले डाउन किया है। और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, और प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दें कि मुझे और किस टॉपिक पे जो है आगे फ्यूचर में इस तरह के वीडियोस बनानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।